So today's our topic is significant figures. Significant figures may be defined as accurate digits plus doubtful digits. Now what are accurate digits and doubtful digits? We will understand this by taking an example of length of a rod. Length of a rod when measured by different students, its length comes out to be 24.2 centimeter, 24.3 centimeter and 24.25 centimeter. Now the common thing here is 24. 24 तो कॉमन है ना. जो डेसिमल तो बाद वाली डिजिट्स ने वो डिफरेंट आ रही ने. दैट मीनस सानू नहीं पता कि उस रॉड की लेंथ एग्जैक्टली कितनी है. 24.2 है, 24.3 है, 24.25 है. नाउ दिस वन, these are known as accurate digits which are common in all the measurements, and the digits which are after the decimal, this one, these are doubtful digits. So these are the doubtful digits. Significant figure is accurate digit plus doubtful digit. Now we will understand that in any statement, in any given number, how we can find our number of significant figures. 2, 3, 4, we'll calculate that. Okay, so to calculate the significant figures we have some rules. We'll study them by this way. Okay, sometimes significant figures is also written as significant figure is all accurate digits plus one doubtful digit. We'll now count the significant figures according to the rules. First rule is that all non-zero digits are accurate digits or significant digits. This is basically known as significant figures. All non-zero digits are significant in nature. We can say it like this. For example, 3.144. In this example we have all non-zero digits, so here there will be 4 significant figures. This is the basic rule, simplest rule, that all non-zero digits are significant one. Second rule is all zeros between two non-zero digits or two significant figures are also significant. मतलब कि साडे कोल नॉन जीरो डिजिट्स हैगे ने या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैगियां ने, अगर उन्हां दे विच कोई जीरोज़ आंदियां है तो वो भी की हो जाएंगियां, सिग्निफिकेंट हो जाएंगियां. फॉर एग्जाम्पल we'll understand it by the help of an example. Suppose here is 4.03. 4 is non-zero, 3 is non-zero. This 0 is in between two significant figures, so it will also be significant. Here will be 3 significant figures. Or 2.001. Here is significant figure, here is significant figure. These are in between the significant figures. These zeros are in between the significant figures, so these will also treated as significant figures. So here will be 4 significant figures. Now comes our third rule, which is very much important, that is about ending zeros. Firstly I will explain it. Ending zeros, कोई भी नंबर लिखिया है जदों वो जीरोज़ दे नाल एंड हो रहा है, दैन वो जो पिछे वाली जीरोज़ होणगियां जिन्हां दे नाल नंबर एंड हो रहा है उन्हां नूं असीं सिग्निफिकेंट काउंट करांगे या नहीं करांगे. इहदे दो केसिस ने, फर्स्ट केस एंड सैकेंड केस. फर्स्ट केस इज़ इफ द जीरो इज़ आफ्टर डेसिमल लाइक दिस, आफ्टर डेसिमल, एंड सैकेंड इज़ एट द एंड. एट द एंड वाले भी सानू बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. सपोज इत्थे 1 है जितना, अगर 0 होए
है ना, एट द एंड। इन दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ आफ्टर डेसिमल एंड एट द एंड zeros will be significant. They will count as significant figures. For example, 2.40, this is significant, this is significant, this 0, what about this? This is after decimal है ना, this is after decimal, first case भी done है and second at the end, this is at the end, second भी done है, so it is also significant. So here will be 3 significant figures. Next example, 3.000, this is significant. Now we'll talk first about this one 0. This one 0. This 0 is after the decimal at the end. It will be significant. This is significant. This is significant. Second rule, they accordingly all the zeros between two significant figures will also be significant. So these will also be significant figures. So here will be 4 significant figures. Similarly, 2.300. This is significant, this is significant, this is significant because it is at the end, and this 0 is also significant because it is between two significant figures. So here will be 4 significant figures. Okay, next example is 420. This is significant, this is significant. This 0, what about it? It is at the end, it should be significant, but here is no decimal, decimal एथे नहीं है, so it will not be significant. Here will be only 2 significant figures. Okay, you can try more examples of it in the book. Fourth is about initial 0. Initial 0 मतलब कि अगर साडा जो नंबर है वो स्टार्ट ही 0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, then what about it? Initial zeros ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ they will be insignificant. Initial zeros that will be insignificant. For example, here is a number 0.0042. here is 0.0042. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. significant figure, significant figure, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, so here will be only 2 significant figures. Okay, similarly 0.1020, this is at the end, it will be significant, significant, significant. This is between two significant numbers, so it will also significant. Here will be 4 significant figures. Our fifth rule is power of 10. 10 raised to power this, 10 raised to power this, that one. Power of 10 will forever insignificant. It will forever insignificant. For example, 2.4 into 10 raised to power 6. This factor will always insignificant. This is significant, this is significant, so here will be 2 significant figures. Or 3.0 into 10 raised to power 7. This is always insignificant. This is significant. This 0 is after the decimal and also at the end, so it will be significant. Here will be 2 significant figures. Next is our 6th point, which may or may not be given in your book. It is about pure number or constants. In every constant, significant numbers are infinite. Every time they are infinite because we don't know their exact value. For example, if we are given as Avogadro's number, which you have used a lot in the mole concept, if someone is asked how many significant figures are there in
Avogadro's number. So we'll say these are infinite significant figures because it is not we have not given the particular value of Avogadro number, it is in decimal. Similarly, for the speed of light 3 into 10 raised to power 8, it will also have infinite significant figure. So these are the 5 rules of significant figure. I hope you can understand this easily. Now we will try some examples in which all our rules of significant figures will get used. So first is 0.020, second is 2.341, third is 2.10 into 10 raised to power 6, fourth is 0.0123, fifth one is 0.004200, sixth one is 26001, seventh is 31.00, eighth is 120, and ninth is 130 into 10 raised to power 4. So we'll count number of significant figures. Here, number of significant figures. These are initial zeros, these are not significant. This is significant, and this 0, it is after the decimal and at the end, so it will be significant. Here will be 2 significant figures. Here all the numbers are non-zero, so all will be significant. Here will be 4 significant figures. Here this is insignificant always, है ना? This is significant, this is significant, this is at the end and after the decimal, so here will be 3 significant figures. Here these are initial zeros, these 3 are non-zero, so these are significant figures. Here initial zeros, insignificant, significant, 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 because at the end after the decimal between 2 significant figure this is written, so it is also significant. There will be 4 significant figures. Significant, 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 between significant figure, these 2 are placed between the significant figures, so these will also significant. Here significant, significant, after the decimal at the end, so will be significant. Significant, significant, insignificant, because there is no decimal. This is insignificant, significant, significant, insignificant, so here will be 2 significant figures. Okay, you can note them. Now before understanding the addition, subtraction, multiplication and division of significant figures, we'll understand the concept of rounding off. Rounding off the significant figures. We'll understand first rounding off and then multiplication, division, addition, subtraction, all. Okay, so rounding off also has some rules which we can written according to our choice, है ना? जिस तरीके नाल सानू ईजी लगता है उस तरीके नाल असीं करते हैं. मैं तुहानू समझावांगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो वील स्टार्ट विद द मोस्ट easy case. First one, if the ending number is less than 5, we'll complete it after having an example. For example, 2.43. 2.43 ਨੂੰ ਅਸੀਂ round off करना है to 2 digits. Round off 2.43 to 2 digits. 2.43 मतलब कि 2 पॉइंट तो असी लिखांगे ही लिखांगे. हुण जिहड़ा ए वाला नंबर है इस नूं राउंड ऑफ करना है जदों इस दे पिछे वाला नंबर देखना है. दिस इज 3 इज लेस दैन 5. देन राइट द नंबर एज इट इज. जिस तरीका नाल है
जिन्ना नंबर है वही लिख दिता जाए, 2.4 ही लिखा जाएगा। 1 2 3 4 जो मर्जी होए, 5 वाला केस असी बाद च करते हैं। इफ इट इज़ लेस दैन 5 दैन राइट द लास्ट वन डिजिट, है ना। सपोज इफ इट इज़ मतलब 3 डिजिट्स तक सानू बोलिया जाता है ना, कोई 4 वाला नंबर होंदा, दैन उहदे विच भी असी की करते, थर्ड वाले लिए असी पहला 4th वाला चैक करते। इफ इट इज़ लेस दैन 5 दैन असी थर्ड वाले नू एज इट इज़ ही लिख देंगे। इहदे नाल दी एग्जाम्पल सानू मिल जाणगी, असी मैथ्स दे विच लोअर क्लासिस दे विच चीज़ कीती भी होएगी। सैकेंड इज़ if the ending number is greater than 5 then add 1 in the last rounding of digit। जिस भी नंबर तक सानू राउंड ऑफ करने लिए बोलिया गया है उस नंबर विच एक ऐड कर दिता जाए। फॉर एग्जाम्पल 2.262 digits. It is understood that it is to be round off. 2.26 it should be round off to 2 digits. So 2 point written is as it is, 6 is greater than 5, so add 1 here. Its answer will be 2.3. Now third case, if the ending number is 5 itself. If the ending number is 5 itself, so there are 3 cases. If the ending number is 5 itself, then there are 3 cases. Okay, if the ending number is 5 itself, it has 3 sub cases. First one is if there is a non-zero number after 5. If there is 0 after 5. If nothing is written after 5. There are 3 cases. So in first case, that if there is a non-zero number after 5, suppose 2.251, here is 2.251, it should be rounded off to 2 digits. So 2 point is written as it is, है ना। 2 digits तक असी करना है, मतलब ये 2 है जोड़ा इंक्लूडेड होएगा। नाउ वी हैव टू चेक दैट 2 इज़ रिटन और 3 विल बी रिटन, है ना। सो इस दे लिए मैं इस दे पिछे वाला नंबर चेक किया 5 दे पिछे भी कोई नंबर है जोड़ा कि नॉन जीरो है। इफ इट इज़ नॉन जीरो देन ऐड हियर 1। इफ देर इज़ अ नॉन जीरो नंबर आफ्टर 5 वी हैव टू add 1. If there is a non-zero number after 5, write here add 1. We have to add 1. Similarly, we can take much example. Suppose 2.252, 2.257, 2.259. सबदा ही आंसर जो है it will be 2.3 because after 5 there are non-zero numbers. If there is 0 after the 5, if there is 0 after 5, if there is 0 after 5, it again has 2 cases, odd, even. We'll understand it with the help of an example. If here is 2.250, 2.350, 2 digits तक असी इनू की करना सी, राउंड ऑफ करना सी। सो 2 point will be written as it is. This 2 will it be written as 2 or 3? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं नंबर देखा 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ सी 0। अगर तो ये ऑड है ना, 5 के पिछे 0 है। अगर तो 5 तो पहले वाला नंबर ऑड है देन राइट इट
as it is. But if it is even, sorry, here it should be written as even, here it should be written as odd. अगर तो वो even है then write it as it is. अगर वो odd है then add 1. So here it is even number. 0 है, even number है, it will be as it is. अगर odd है then add 1. Okay. Now if nothing is written after 5, here are also two cases, even and odd, which are similar to these cases. If it is even, 2.25, I am taking the same example, 2.35. Nothing is written after 5, 0, non-zero, nothing is written. If it is odd, है ना, the number before 5. If it is even, then write it as it is. If it is odd, add 1. If it is even, write as it is. If it is odd, then add 1. This is the table. You can note it down. Now we'll have some examples related to rounding off. First is 0.04234. Round off to 3 digits. 3 digits. जिन्नियां भी असीं एग्जाम्पल्स करांगे सारियां दे विच असीं 3 digits तक उन्हां नूं राउंड ऑफ करांगे. Second is 2.345. Third one is 7.123. Fourth one is 3.1352. Fifth one is 23510. Now we have to round off up to 3 digits. First of all, we'll note how many significant figures are there. These are initial zeros, these are not significant one. Significant. We have 4 significant figures here, but we have to write only 3 significant digits. 3 significant digits. So we'll note that how many significant digits we have to write. We have to write only 3. First, second, third. For 0.0423, it contains 3 significant figures, but we have to round it off. So we'll choose the number which is written after 3. This is 4, which is less than 5, so it will be written as 0.0423. These are all significant figures, है ना? These are all significant figures. 1, 2, 3, 4. We have to write only 3. This 4 is, will it should be written as 4 or 5? It depends on 5. एक ही करता है 5 ऊपर डिपेंड करता है. ओके, हुण 5 दे केस विच असीं 3 केसिस होर पढ़े सी. अगर तो 5 दे पिछे नॉन जीरो नंबर है जिहड़ा कि नहीं है, 5 दे पिछे तो कुछ भी नहीं लिखा होया, सो इट विल बी थर्ड केस. इफ नथिंग इज रिटन आफ्टर 5, दैन चैक करो कि 5 दे अगर अगे इवन नंबर है या ऑड नंबर है. दिस इज इवन, सो इवन है तो इट शुड बी रिटन एज इट इज. ओके, 3 significant figure. Fourth one nu देखो, which is less than 5, so 2 is written as it is. Fourth which देखो 1 2 3 है ना. 1 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ as it is ही लिख लईए. 3.1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फोर्थ वाले ਨੂੰ देखिया, फोर्थ वाले ਨੂੰ देखिया 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ नॉन जीरो है. ਜਦੋਂ ਵੀ नॉन जीरो नंबर होएगा ਅਸੀਂ 1 ऐड करांगे. सो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ऐड किया, here it is 3.14. 3 ਅਸੀਂ डिजिट्स ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिग्निफिकेंट डिजिट्स ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. सो we'll write it as 23510. 3 तक असी लेने हैगे ने. जदों इस तो बाद असी 5 तो बाद नंबर देखिया जेड़ा कि सी नॉन जीरो सी.
नॉन जीरो सी तो की असी करांगे 1 ऐड करांगे, है ना, होएगा ऐड 5 के पिछे नॉन जीरो डिजिट है तो ऐड हो जाएगा, इट विल बी 236. इफ देयर इज अ नॉन जीरो नंबर आफ्टर 5 then we'll add 1. Okay, it will be written as 236. These are the examples related to rounding off. I hope you will understand it. Now we will do addition, subtraction, multiplication and division of significant figures. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ. ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ and division of significant figures. जिन्नियां साडे कोल सिग्निफिक मतलब दोनों नंबर्स 2 नंबर है 3 नंबर है 4 नंबर है जिहदे विच उन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ देखना है असी जिहदे विच सब तो घੱਟ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होणगीਆਂ आंसर दे विच भी असी की करांगे आंसर नूं भी असी राउंड ऑफ करके की कर देवांगे उन्नियां असी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले जावांगे. ठीक है, एक असी इहदी होर एग्जाम्पल कर लैंदे हैगे आ डिवीजन दी. डिवीजन दे विच भी यही चीज़ हैगी है. डिवीजन दा केस 36.48 डिवाइडेड बाय 12 है ना. जदों असीं इहनूं डिवाइड किया इहदा आंसर आया 304. ओके, इत्थे भी असीं करांगे कि वो 2 नंबर छड्ड के डिजिट लगावांगे. सिमिलरली इत्थे भी उही चीज़ होएगी. हुण मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स जदों काउंट कीते इत्थे सी 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स इत्थे सी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स. सो इत्थे मेरे कोल हैगे 3 डिजिट्स. इन्हां नूं मैं की करांगी राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ले जांगी. 3 तो एज इट इज़ आएगा ही पॉइंट. हुण 0 0 ही रहेगा या 1 बनेगा वो डिपेंड करता है 4 ते विच इज़ लैस दैन 5. सो इट विल बी रिटन एज 0. इट विल बी 3.0. ओके, सो नेक्स्ट इज एडिशन. एडिशन एंड सबट्रैक्शन. डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का एक अलग रूल है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन का अलग है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विच असीं की देखिया सी the answer contains same number of significant figures as the number which contains least significant numbers. You can write it in your language. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ आफ्टर डेसीमल किए जाते हैं. कोई भी नंबर है वो डेसीमल तो बाद जिन्नियां भी थोड़े कोल जिस भी नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबरस होणगियां असीं आंसर नूं राउंड ऑफ करके उत्थों तक ले जावांगे. आफ्टर डेसीमल जो है ये एक नवा वर्ड जुड़ता है जिवें 2.42 प्लस 1.32 प्लस 0.2. जदों असीं इहनूं ऐड करांगे साडे कोल जो आंसर है वो बनता है 3.94. इट इज़ एडिंग बाय सिंपल मैथड 3.94. हुण असीं चैक करांगे कि ना तिन्ना नंबर्स विच आफ्टर डेसीमल लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स किहदे कोल ने 2 2 एंड 1. सो जो नंबर है उन्होंने भी राउंड ऑफ करके असीं की करांगे उहदे भी मतलब आफ्टर डेसीमल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो रहना चाहिए है.
3.9, this is less than 5, so 9 will be written as it is. Similarly for the subtraction ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 6.02 into 0.12, 6.02 plus 0.12। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ 0.744, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ 6.32। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਸੌਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ 6.2 ਹੀਅਰ, 6.2 ਹੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 5, ਸੋ 4 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ 1, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ 2। ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 6.3। 2 is less than 5. You can try more examples of addition and subtraction from the book. Okay, so after this your topic significant numbers has been completed.